Good evening, ladies and gentlemen. Dear kids, we are back again, and guess who we've bought today? You might be surprised. Ma'am has not sent us any link, ma'am has not sent us anything. But yes, Guneet has understood. She's saying it's Anubha, ma'am. Wow, Gurneet, that was a very, very close guess. So here I present before you again. It's none other than our dear Anubha. Hi, Anubha. The kids are Hello, really everyone. very excited to have you all back. They think, wow, ma'am, it is Anubha, ma'am. So instead of wasting time, I think I should hand over the stage to you, and you get involved with the kids. Yes. So, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, are you all ready today? Great. Today I've got a story from one of my really favorite authors, and his name is Roald Dahl. And the story that I have for all of you, this is an abridged version that I have, and I'm going to tell you the name of the story at the end, or you can actually guess the name of the story towards the end if you know about Roald Dahl's books. So let's begin. The story is about a man whose name was Mr. Hoppy. Now, Mr. Hoppy lived in a big concrete building. He was retired from work. Now he was more lonely than ever. Hmm. Now Mr. Hoppy had two loves. Hmm. One was his beautiful balcony that was adorned with beautiful fuchsias, daisies, rain lilies that would bloom in the rain, beautiful tea roses that would bloom, sunflowers that would just look towards the sun and grow taller and taller. That was one of his loves. And apart from flowers, he grew some veggies too. So every morning he would wake up and tend to his flowers and veggies. And then he would just stand in the balcony and talk to Mrs. Silver. Mrs. Silver's balcony was right beneath Mr. Silver's balcony, and Mrs. Silver would look up and say, "Oh, hello, hello, Mr. Hoppy. How are you doing?" And Mr. Silver would say, I'm good, Mrs. Silver. How are you doing?" Now, I said in the beginning, Mr. Silver had two loves. One was caring for his plants, and the other was a secret that only he knew in his heart. The other love was Mrs. Silver, and every morning he would look down and look at Mrs. Silver's beautiful salt and pepper colored hair, and he he almost wanted to invite her for a cup of tea. But every time he gathered the courage to invite her over, something happened. His he was tongue tied. He used to get tongue tied. Now, my first question to all of you is, you need to send me the answer to what do you understand by tongue tied? Or have you ever been tongue tied? So then you can write down the situation where you have been tongue tied. Now, moving on to Mr. Silver, he used to be tongue tied. He couldn't gather the courage to invite her for a cup of tea or Sorry, perhaps some Anubha, it is biscuit. dumb tied, right? Dumb tied. Yes, tongue tied. Tongue tied. Yes.
Now, Mrs. Silver gave all her love to someone else. Hmm. Mrs. Silver had a tiny pet which had a hard exterior with soft body outside. Mrs. Silver had a tortoise. Yes, and she called him Alfie. And Mrs. Silver would give all her love to Alfie. Oh, my Alfie, dearest, come out. Mrs. Silver prepared special food for Alfie because Alfie used to eat really different things. He used to eat tomato and sometimes lettuce because he could like chewing on it. And Mrs. Silver had also made a tiny home for Alfie, where Alfie would crawl in and crawl out of. Yes. Now, Mr. Silver Mr. Hoppy kept thinking, oh, what do I do? What do I do? She's giving all her endearments, all her love to Alfie. Now, when the weather used to be extremely cold, Alfie would go down into his home and hibernate. Now, my second question to all of you is tell me the name of 5 animals who hibernate, or what do you mean by hibernation? So Alfie would hibernate. He would just go and just bury himself deep into the hay in his comfortable home and hibernate. And then when it was beautiful spring and when the flowers would bloom again, Alfie would crawl out and Mrs. Silver would be extremely happy again. Oh my God, Alfie, you're out, Alfie. Oh my God, oh my God. Yes, she would clap, 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 tap, tap, tap. Alfie, clap, 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 tap, tap, tap. Alfie, oh my darling, you're back. I'm so happy to have you. Oh, how I've missed you, Alfie. I've waited all these months for you to come out of hibernation. And Mr. Hoppy would be standing there looking at Mrs. Silver and thinking, how I wish I could exchange places with that tortoise. I really wish. She loves him so much. I really want to exchange places with him. So Mr. Hoppy kept thinking and thinking and thinking, and then during the month of May, something happened. A bright morning that changed and electrified Mr. Hoppy's life. He was leaning over his balcony as usual, looking at Mrs. Silver feeding Alfie a nice crunchy bunch of lettuce. And Mrs. Silver looked up and said, "Oh, hello, Mr. Hoppy. Mr. Hoppy, are you well? Everything's well?" Mr. Hoppy said, "Yes." But she sounded a little worried. And she said, there's a, I don't know how to tell you, Mr. Hoppy, but you see, oof, there's something that's really worrying me. Every time I look at Alfie, I really, really, really wished that he grew a little bit faster. You see, I've had him for 11 years. And you know how much he weighs now?
just 500 grams. That's almost like a muskmelon, एक खरबूजे के जितना, इतना हल्का. And you know what? I weigh him every time he comes out of hibernation, but I don't know what to do. I really, really wish that he grew a little bigger, faster. Now, Mr. Harpy looked down and he said, Mrs. Silver, well, actually, I do know something. I don't know if you believe in it, but I do know something that will actually help you. See, there are. Oh, you know what? Mrs. Silver said, oh, why don't you come down and tell me? Mr. Harpy was overjoyed. He jumped and he ran and he quickly went down and said, "Okay, do you have a piece of paper? I'll write it down for you." Now, Mr. Harpy wrote something like this. He said, "Essio trot." If you have a pen and paper, you can write it down. You'll figure it out. He said, "Essio trot, teg, regib, emakno, Essio trot, war poo, poof poo, poof poo." And Mrs. Silver looked at the piece of paper and thought, I'm sorry, Mr. Hoppy, what do I do with it? And Mr. Hoppy said, well, you see, he was filled with newfound confidence. And he said, actually, tortoises are backward creatures and they understand human language, but vice versa. So, they understand human language written backwards. So when I said Essio-trot, it simply meant tortoise, teg, regib, get bigger. Come on, tortoise, grow up, puff up, shoot up, spring up, blow up, swell up. Gorge, guzzle, stuff, gulp, put on fat, tortoise, put on fat, get on. Gobble food. All right. Mrs. Silver said, well, I'll try it. I'm going to say it again, what I said. Okay, so Mrs. Silver said, I will try it and let me see if it works or not. I don't really believe in magic, you see. So, next morning, Mrs. Silver woke up and quietly in the ears of Alfie said, Essio trot, teg, regib, Essio trot, teg, regib. Come on, wherever you are, you can sing with me, okay? Essio trot, teg, regib. Imokno, Essio trot, teg, regib. Essio trot, teg, regib. Essio trot, teg, regib. So, she spoke those words and then she went to her workplace. Now, the plan that Mr. Hoppy had unfolded. Mr. Hoppy, you will see, he had bought a tortoise catcher. No, he was not going to harm Alfie. It was like a big stick with claws towards the end. And while Mrs. Silver was at work,
He lowered the tortoise catcher and pulled Alfie. Hmm, what is he going to do with it? You shall see. He picked up Alfie and quickly went into his room where he had gone to every pet store in the town and he had tortoises of different shapes, sizes, similar color and shell. Now he had two, so he picked up Alfie, he weighed him, and he looked at another tortoise that weighed just. So, how much did Alfie weigh? 500 grams, right? Mrs. Silver had said in the beginning that he's only 500 grams, like almost like a kharbuja. So, he picked up another tortoise, weighed. Now, this was tortoise number 2. This tortoise weighed exactly 50 grams more than Alfie. He picked up, put him in the tortoise catcher, and lowered him in the balcony. And when Mrs. Silver came back, she said, "Hey, Alfie, Mommy's back. I missed you." And upstairs, peering from between two pots, was Mr. Hoppy. So Alfie was 500 grams and tortoise number 2 was 550. Okay? Alright. Now, the tortoise number 2 was just sitting there chewing a piece of lettuce, and Mrs. Silver said, "Well, you do seem hungry. I think the magic is working." So, even in the evening, Mrs. Hoppy went to tortoise number 2 and said, "Es your trot, teg, regib, regib. Es your trot, teg, regib, regib. Tup no taff, es your trap, tup no taff, techno, teg, regib, regib." Now, Alfie grew a little bigger, and this was a very clever plan. So, Mr. Hoppy waited for 7 days, and 7 days later, he put the tortoise catcher, pulled the tortoise number 2, kept him on the shelf, and picked up tortoise number 3. Checked whether the shells matched. It was simple. He needed another tortoise that weighed 50 grams more than tortoise number 2. And you must be thinking, oh, he could have just gotten a bigger tortoise and he could have just put him there, and then Mrs. Silver would have felt that, However, as creatures, we grow a little every day. But even as kids, we grow a little every day. But when do our parents realize that we've grown? When our shoes don't fit, when our clothes don't fit, they realize, now you've grown taller, or you've grown bigger, or your feet have become bigger. So, suddenly if you grow, the parents will notice. So similarly, if he would have replaced Alfie with a much bigger one, Mrs. Silver would have doubted. Okay. So, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोग हो, अगर आप एक दिन से इतने बड़े हो जाओगे तो मम्मी पापा को लगेगा अरे ये क्या हो गया है। लेकिन अगर आप धीरे धीरे जैसे कि हम रोज बढ़ते हैं
तो मम्मी पापा को पता नहीं चलता, और कब पता चलता है वो तब जब हमारे कपड़े छोटे हो जाते हैं या फिर हमको हमारे शूज चप्पल नहीं आते हैं. सो सिमिलरली मिसेस सिल्वर को भी पता नहीं चला, क्योंकि थोड़े थोड़े दिन में थोड़ा थोड़ा बड़ा टॉर्टस आ रहा था. सो नाउ दिस वाज टॉर्टस नंबर 3. सो मिस्टर हॉपी की पॉलिसी थी, स्लोली डज इट, इट डजंट हर्ट इट. Okay, now 7 days later, he changed. Tortoise number 3 was 600. Then 7 days later, he changed. Tortoise number 4, then tortoise number 5, then tortoise number 6, then tortoise number 7, and 8. So, my question is actually, Reena ma'am, my question is, what was the weight of tortoise number 8? That's the question. What is the weight of tortoise number 8? तो पहले Alfie का weight was 500, second tortoise का 550, third का 600. तो tortoise number 8 तक जब हम पहुंचेंगे, so what will be the weight? That you have to calculate and tell me at the end of the story. Okay? So now Alfie had almost doubled in size. Now Mrs. S or Mrs. Silver had not noticed a thing. And one day she said, I do think you're getting bigger. And then she picked up tortoise number 8 and she decided to weigh him. And when she weighed him, she shrieked or cried, Mr. Hoppy! Mr. Hoppy, look! Mr. Hoppy, look! You have to come down, look! Alfie is too big to get into his house! He's trying, पर वो इतना बड़ा हो गया है कि वो अपने छोटे से घर के अंदर जा ही नहीं पा रहा है. Oh no! What do I do, Mr. Hoppy? So Mr. Hoppy ran and ran and ran, and he said, well, should I enlarge the door? No. Mr. Hoppy was calm, cool as a cucumber. He was cool as a cucumber, and he said, well, it's very simple, Mrs. Silver. You just have to change the magic words. आपको सिर्फ magic words change करने हैं. And he got a piece of paper and he said, Ethiotrod, tag a tape, relams a tape. तो इसका मतलब क्या था? Simple. Tortoise, get a bit bigger. Get a bit smaller. And next day, when Mrs. Silver went to work, Mr. Hoppy decided, all right, he quickly pulled down the tortoise catcher, he quickly checked, and he put down another one, and he tried to move him into the tortoise home. तो उसने एक और tortoise लिया और कोशिश की कि थोड़ा सा छोटा इसके अंदर जो घुस जाए उसके घर के अंदर, वो, बट वो नहीं घुसा. फिर से वापस से, and finally उसको एक tortoise मिला जो थोड़ा बड़ा भी था एल्फी से और वो घर के अंदर भी घुस सकता था. And then he was extremely happy. And that day, when Mrs. Silver came back, she said, Mr. Hoppy, this is the greatest moment of my life. All your magic words have worked. Come down. And Mr. Hoppy was very, very, very happy, and Mrs. Silver was extremely happy, and she said to Mr. Hoppy, you really are the most wonderful man I've ever come. Why don't you come inside? Let me make you a cup of tea.
And while Mrs. Silver was making a cup of tea, Mr. Hoppy gathered all the courage inside him. Finally, Mr. Hoppy ने क्या पूछा? Mrs. Silver, um, uh, will you marry me? And Mrs. Silver said, well, yes, I didn't think you'll ever ask. Well, Mrs. Silver said, ये सब कुछ Alfie की वजह से हुआ है. Good old Alfie. We'll keep him forever. And next afternoon, Mr. Hoppy went and picked up all the tortoises and gave them for free to all the pet shops in the town. Because now Mrs. Silver became Mrs. Hoppy and they were happy. And that is a story by Roald Dahl. Okay, so let's see क्या क्या questions है हमारी story से related और क्या क्या answers है. तो चलो मेरे प्यारे बच्चों शुरू हो जाओ. तो क्या था हमारा first question? Our first question was, what do you understand by tongue-tied, and have you ever been tongue-tied? If yes, please mention the situation. Okay, चलो बताओ. किसको पता है tongue-tied क्या होता है? Tongue-tied means to speak with hesitation, not ever, but when we talk to, and yes, when we talk to strangers, we do get tongue-tied. Means if you cannot say the words properly and they get stuck in your mouth. That's also correct, Vartika. Sahi jawab. What else? Let's see. You're not able, Sidhu says, not able to speak words properly. I've never ever been tongue-tied. Very good. Great. Good. Okay. Next answer, ma'am. Tongue-tied means to speak with hesitation, not ever, but when we talk to anybody stranger. That's correct, Harmeet. To be, if you cannot say words properly, actually, Shilpa, nahi. When you can't say words properly is partly correct. क्योंकि टंग टाइट का मतलब होता है आप बोल ही नहीं पाते हो. एक्चुअली टंग अगर आपको टाई कर देंगे तो आप बोल ही नहीं पाओगे. तो okay, let's look at other answers. Okay, we're moving on to question 2. ठीक है. तो yes, we'll go to question number 2. So tongue tied is actually in real life, tongue tied means when you want to speak but you are unable to speak. So it has nothing to do with words. You're not able to speak. So for example, I'm going to give you an example जिससे आप लोग relate कर पाओगे. जैसे कोई किसी दिन आप होमवर्क करके नहीं गए हो क्लास में और आप भूल गए हो अपनी कोई भी नोटबुक ले जाना और फिर मैम ने पूछा कि अच्छा अनुभा, वेयर इज द नोटबुक, एंड यू आर लाइक तो आप बोलना चाहते हो लेकिन आप बोल नहीं पाते हो. दैट इज व्हाट टंग टाइड मीन्स. तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. हाइबरनेट. Hibernate means to season snooze. That's correct. थोड़ा elaborate करो. Season snooze मतलब तो गूगल के आंसर मत बताओ मुझे अपने वर्ड्स में बताओ. Hibernate, Sidhu says hibernate means to sleep in deeply, and the animals who hibernate, snakes, bear. Yes, एक बहुत ही कॉमन एनिमल है जो आजकल आई एम श्योर सबके घरों में दिखाई दे रही है, छोटी सी, वो भी हाइबरनेट करती है. क्या बोलते हैं इसको? To take a deep sleep during winter. Animals are tortoise, bear, and snakes. That's correct. They're actually, yeah. Snakes, bear, hibernate, yes. Bats, turtles, snakes, woodchucks, and ground squirrels. Yes. What about lizard? Lizards also hibernate. तभी तो सर्दियों में lizard दिखाई नहीं देती और suddenly मौसम गर्म होता है और आजकल
No, you can just type out your answers here. Okay, so chalo, next question. What was our last question? Yes, snakes, bats, bear, woodchucks, ground killers. That's correct, Shilpa. So hibernation is a process that animals actually in extreme winters they sort of go in a deep sleep and they rest. Actually question 3 जो है वो हाँ, question 4 is question 3 now. What was the total weight of tortoise number 8? ये वाला बताओ. इसमें थोड़ी सी मैथ थी ना, तो मैं जानना चाहती हूँ. थर्ड वो 600, दैट्स करेक्ट. बट टॉर्टस नंबर 8 कितना था? मैंने तो भाई लिख के कैलकुलेट किया था. तुम लोग बताओ बिना कैलकुलेट किए. टॉर्टस नंबर 8 is 850. दैट्स करेक्ट वर्तिका. 850 सही जवाब. 850 क्या? 850 kgs. 850. Yes, that's correct. 500 grams and weight of tortoise 3 was 600 grams. Yes, tortoise number 8 was 850 grams. Yes, correct, Amandeep. Okay. Nearly all of them have given the correct answer. Yes, they have all given the correct answers. A lot of them. Yes. Most of them. Most of them. Yeah. Okay, so we will call them all on whoever you want. We'll call them on screen. Actually, the kids who have been actively answering and who are very near to the answers, I have already sent them the links. Akal Preet has joined. She's always the first one to join. Come on screen, Akal. Hello, ma'am. Hi, Akalpreet. Good evening. How are you, ma'am? I'm very good. How are you? I'm also good. Wonderful. Very मैम nice. बहुत So, अच्छा लगा आपसे वापस मिलकर. हाँ, अच्छा तो आपको स्टोरी कैसी लगी? Subscribe. तो क्या कैसी लगी आपको स्टोरी? अच्छा, स्टोरी का नाम तो किसी ने बताया नहीं मुझे. The story is called Miraculous Ever Growing Tortoise and the name of the author is Roald Dahl. And Roald Dahl बहुत सारी मजेदार स्टोरीज लिखते हैं. So this is one of the stories that I thought कि आज मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी. तो मैम आपको मैंने कैसी अपना लगी? YouTube चैनल भी सब्सक्राइब किया है. थैंक यू कालप्रीत. तो कैसी लग रही है आपको ये स्टोरी? बताओ. मैम बहुत अच्छी लगी. बहुत अच्छी लगी. क्या अच्छा लगा ये बताओ. मैम जैसे आप अपने मैम ऐसे जैसे आप अपने इमोशंस क्रिएट करते हो, ऐसे बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस देते हो. मैम मुझे स्टोरी भी बहुत अच्छी लगी. जैसे आप एक्सप्रेशंस देते हो वो तो सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं आपके. अच्छा ठीक है, चलो ये तो मेरे बारे में हो गया. अब ये बताओ स्टोरी में क्या अच्छा लगा आपको सबसे ज्यादा? सोच लो. सोचो. टेक योर टाइम, डोंट वरी. She's gone. She'll come back. Actually, yes. There is Shilpa who has logged in. Now Navtej has logged in. Please come on screen and unmute yourself, Navtej. Can you hear me, Navtej? Yes. Oh, it's Gudi. Hello How are you? Navtej. She's Gudi. Guneet.
Yes. Hi, Guneet. Okay, she's disappeared. मैम मेरे तो पर वॉइस आ जाने दो, सब लोगों को आ जाने दो. Good evening. आई एम खुशप्रीत कौर Hello, Gurpreet. अरे यार मेरे को पूछना उससे She's Preet. मुझे थोड़ा थोड़ा स्टोरी समझ में आएगी मैं ना खुशप्रीत क्या करता क्या Hi, Navtej. क्या करता है वो हाय मैम Hello. हेलो मैम How are you? हाय मैम Good morning. I am first class. You're first class. That's wonderful. Khushpreet Kaur. Hanji, Not Gurpreet Kaur. Khushpreet Kaur. Not Khushpreet Kaur. Khushpreet Kaur. Yes, ma'am. Okay, now I got it. Okay, Khushpreet. I am Fatehgarh Saif. Oh, Who are you? I'm very good. अच्छा, आप एक काम करो, आप एक जगह बैठ जाओ, ठीक है? फिर हम आराम से बात करेंगे, ठीक है? एंड या ओके, नवतेज इज बैक. तो चलो मैं दोनों से ही पूछती हूँ. और मैं जब भी स्टोरी सुनाती हूँ, बच्चों को भी नहीं, बड़ों को भी, मैं हमेशा ये क्वेश्चन पूछती हूँ. तो आपको मैं अच्छी लगी, थैंक यू, पर आपको मुझे ये बताना है कि आपको कहानी में क्या अच्छा लगा और क्यों. तो दो क्वेश्चंस हैं. व्हाट डिड यू लाइक इन द स्टोरी एंड व्हाई. एंड कैन आई प्लीज रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू हैव योर कैमराज ऑन, क्योंकि ये बहुत अनफेयर है. आप मुझे देख सकते हो और मैं आपको नहीं देख सकती, ठीक है? सो टेक 2 minutes, सोचो कि कुछ भी, एनीथिंग फ्रॉम द स्टोरी दैट यू लाइक. तो आपको क्या अच्छा लगा और क्यों, बताओ. वन बाय वन वो तो क्या अच्छा लगा बताओ. खुशप्रीत से स्टार्ट करते हैं. खुशप्रीत बताओ. बताओ क्या अच्छा लगा Elfie's bag. Alfie's bed. Elfie's Elfie's bag. अच्छा, तो क्या था उसमें? Silver very happy. मिसेस सिल्वर वाज वेरी हैप्पी. ओके, तो क्या आप भी खुश हुई ये स्टोरी सुन के? Yes, ma'am. थैंक यू. Okay, Srushti says I like the tortoise part because I like tortoise so much. Yeah, okay. Chalo. Thank you, Khushpreet. I'll ask Akalpreet now. बताओ Akalpreet. मैम मुझे मैम मिस्टर सिल्वर की मैम उसके हेयर्स बहुत अच्छे लगे. Okay, मिसेस सिल्वर के हेयर किस कलर के थे? मैम वो कलर थे. कलर थे? क्या कलर था? आप सोचो. I'll move to Navtej. I'll come back to you. बताओ Navtej. What did you like in the story and why? Navtej, please unmute yourself. मैम जब आपने वो सिल्वर अच्छा. Mrs. Silver, what did you like about Mrs. Silver? मैम जब एल्फी बैग आ गई थी तो मिसेस सिल्वर बहुत हैप्पी थी तब. ओके. और क्या क्या किया था मिसेस सिल्वर ने? 2 एक्शंस किए थे. क्या थे वो 2 एक्शंस, बताओ. मैम she clapped and she danced. Yes, you're close. So she clapped and tapped. She clap, clap, clap and tap, tap, tap.
Okay, thank you. So what is your name? You said Navtesh is your brother. Ma'am, Gurneet. Gurmeet. Thank you, Gurmeet. Okay, Vartika. Gurmeet, please mute yourself. Yes, Vartika. Tell me. Oh, Vartika has disappeared. चलो कोई बात नहीं. अब मुझे ये बताओ, सृष्टि, okay, sure, what question do you want to ask? Please type it down, I'll answer. Meanwhile, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप भी मुझसे पूछ सकते हो. Anything. कोई भी क्वेश्चन अगर बताओ, पूछो. Ma'am, which is your favorite storyteller? Favorite storyteller? My Hello, ma'am. hello, hello, Mannat. I'm Mannat. Hi, Mannat. Hello, ma'am. Ma'am, nice to meet you. Same here. Ma'am, your story is very interesting and like the story. Thank you, Mannat. Anubha, Shrishti asks, ma'am, why do you like this profession? सृष्टि एंड एवरीबडी एल्स, मुझे क्यों एक स्टोरी टेलर होना पसंद है? बहुत सारी रीजंस हैं. मैं आपको कुछ कुछ रीजन बताती हूँ. एक, मुझे बहुत सारी स्टोरीज पढ़ने को मिलती है इस प्रोफेशन में. बट सबसे जरूरी चीज जो मैंने क्यों ये प्रोफेशन चुना है, क्योंकि मुझे बच्चों के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं कोई स्टोरी सुनाती हूँ और कोई खुश होता है. और जब स्टोरी सुन के लोग खुश होते हैं तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ. इसलिए मुझे ये प्रोफेशन बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अपने प्रोफेशन के थ्रू मैं ऐसे ही नहीं है कि सिर्फ कुछ लोगों को ही रीच आउट कर सकती हूँ. मैं कहीं पे भी कितने सारे बच्चों को रीच आउट कर सकती हूँ और एक टाइम पर बहुत सारे लोगों से बात कर सकती हूँ और बहुत सारे लोगों को खुश कर सकती हूँ. इसलिए मुझे प्रोफेशन बहुत पसंद है. और मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, स्टोरीज पढ़ना बहुत पसंद है. आप देख रहे हो कुछ कुछ बुक्स मेरे पीछे है. तो ये कुछ कुछ है जो आपको दिख रही है. तो मुझे पसंद है, मैं सारा टाइम बुक्स के साथ बिता सकती हूँ. इसलिए मुझे ये प्रोफेशन बहुत पसंद है. Ma'am, which is your favorite author? There are a lot of authors that I read. I don't have any one in particular. I do like प्रेमचंद a lot. अगर आपने प्रेमचंद की कहानियां नहीं पढ़ी हैं तो कुछ कुछ स्टोरीज बड़े बच्चे पढ़ सकते हैं. मुझे रस्किन बॉन्ड बहुत पसंद है. और ये दोनों मुझे इसलिए पसंद है, एक हिंदी में लिखते हैं, उर्दू में और एक इंग्लिश में लिखते हैं. आप लोग प्लीज अगर बात नहीं कर रहे हो तो प्लीज म्यूट कर लो, वरना मुझे क्यों नहीं देगा. Ma'am, can I ask you one question? Sure. Ma'am, please suggest me one non-fiction book. आपको किस तरह का नॉन फिक्शन पसंद है, पहले वो बताओ. मैम मुझे मॉरल स्टोरी अच्छी लगती है. अच्छा, एक चलो मैं बताती हूँ आपको. उसके पहले जो आपने बोला ना मॉरल स्टोरीज अच्छी लगती है, मैं सब लोगों को एक चीज बताना चाहती हूँ कि आप कोई भी स्टोरीज, हम लोग यूजुअली सोचते हैं एक कहानी है उसके बाद मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस. ऐसे नहीं होता. आप कोई भी कहानी पिक कर सकते हो और हर कहानी में कोई लर्निंग होती है. मॉरल का मतलब क्या होता है? मॉरल का मतलब होता है आपने उस कहानी से क्या सीखा या क्या समझा. तो आप कोई भी कहानी, एनी स्टोरी यू पिक इन द वर्ल्ड, देयर विल बी अ मॉरल, देयर विल बी अ लर्निंग. तो हमको थोड़ा चेंज करना है कि मॉरल स्टोरीज में मॉरल होता है और बाकी जो स्टोरीज बोलती नहीं है कि उसमें मॉरल है, उसमें मॉरल नहीं है. तो हर स्टोरी में बेटा मॉरल होता है.
I like children's fiction a lot, and I also read books which is non-fiction a lot. I like these days there are a couple of books that I have. You can also get it. Kalpreet, आपने पूछा था ना? So there's a series called Women in Science, Women in Sports. अगर आप देखोगे तो आपको ये बुक्स मिल जाएंगी. So Women in Science मुझे बहुत अच्छी लगी किताब, क्योंकि उसमें बहुत सारी विमेन की स्टोरीज हैं जिन्होंने बहुत ही अनऑर्थोडॉक्स प्रोफेशन चूज किए हैं, जिन्होंने हम सोचते भी नहीं है कि अच्छा ये भी प्रोफेशन होता है साइंस में, ये भी प्रोफेशन होता है साइंस में. तो आप वो बुक ले सकते हो. और पूछिए. There's also another book called My Life with Chimpanzees. जेन गुडॉल की बुक है. अगर आपको एनिमल्स के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है तो आप वो भी ले सकते हो. Okay, Srushti says, can you please tell a horror or a princess story? Actually, मेरे को खुद बहुत डर लगता है, इसलिए मैं हॉरर स्टोरीज सुनाती नहीं हूँ, बट क्योंकि बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट है, सो बहुत जल्दी मैं एक हॉरर स्टोरी शेयर करूंगी अपने यूट्यूब चैनल अनूबा द स्टोरी टेलर. हाँ, आप वहां पे सुन सकते हो वो. और प्रिंसेस स्टोरीज तो हर कोई सुना होता है. Which type of book do you like? Yeah, I told you already. और बताओ, कहाँ गायब हो गए बाकी सब लोग? मैम. यस, कहिए. मैम आपको मैं एक है ना कहानी सुनाऊं, फ्रेंड वाली. ठीक है, सुनाओ. मैम एक मंदिर था तो एक पेड़ पर रहता था. उसके फल बहुत और मीठे और खट्टे थे. फल. और उसका एक मगरमच्छ एक दोस्त था. और है ना मगरमच्छ ने कहा बंदर को, बंदर मुझे थोड़े फल दे, अपनी बीवी को खिलाऊंगा मैं. और मगरमच्छ को है ना बंदर ने थोड़े फल दे दिए और है ना मगरमच्छ चला गया अपने घर. और उसने उसकी वाइफ को बंदर के दिए हुए फल खिलाए तो उसको उसकी वाइफ को बहुत मीठे और अच्छे लगे. हाँ, कि उसके फल इतने मीठे हैं तो उसका दिल कितना मीठा होगा. तो आज का खाना होगा बंदर बिरयानी. मैं ये सोचा, बंदर बिरयानी. फिर क्या हुआ? बोला. यानी कृष्ण को बिरयानी बहुत पसंद है. आगे खाना मगरमच्छ. चल फिर बोल रहा. मैम आगे है ना उस उस मगरमच्छ की वाइफ ने घर पर एक पार्टी रखी, मतलब कि दावत. जैसे हम रखते हैं पार्टी अपने घर. फिर दावत रखी अपने घर. और बंदर भी उनकी दावत में आया. और बंदर उसको पता था बंदर की मेरा वाइफ को कि वो वेजिटेरियन है, इसलिए उसने उसके लिए वेजिटेरियन खाना बनाया और वो उसको खाने लगा. तो मगरमच्छ ने ना बंदर को खाया और ना बंदर ने मगरमच्छ को. अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी कहानी है. पर आज तो फिर मुझे रात को बिरयानी ही खानी है. थैंक
you. बहुत अच्छी कहानी बंदर सुनाई आपने. बिरयानी, हमें बंदर बिरयानी Thank you, ma'am. Thank you, Good. ma'am. You're Yes, welcome. Akash, are you ready with any story? सुनो पुत्र. और मैं फिर क्या कहूंगी मैडम? मैं भी बताओ और क्या पूछना है. I Okay, guess there is a Srishti is problem asking, with the connection. I'm not visible on screen, ma'am. When you start this profession, I started it many years ago. And to which book read first or read first? क्या पूछ रहे हो सृष्टि आप कि This आपको is the second question. कि कौन सी बुक वो पढ़े या कौन सी बुक मैंने पढ़ी थी पहले? मैंने पढ़ी थी वो पढ़ी. शायद. देखो मैं बचपन से इवन सिंस आई वाज इन ग्रेड मुझे फर्स्ट क्लास याद है. मेरी मम्मी मुझे चंपक लाके देती थी जो मेरी बचपन की बहुत फेवरेट बुक थी और मेरे पास अभी भी कुछ चंपक है. तो बचपन में मैं चंपक पढ़ती थी. मैं बहुत सारी कॉमिक पढ़ती थी और छोटी छोटी स्टोरी बुक्स आती थी चंदा मामा करके. मैं वो पढ़ती थी और हमारे स्कूल अभी की भी ना आती है चंदा मामा. अभी हाँ, भी अभी आती भी है चंदा मामा. आती है. तो मैं अपने स्कूल की लाइब्रेरी में जो भी हमको बुक्स मैम देती थी मैं वो पढ़ती थी. और हमारे स्कूल में ऑप्शन होता था कि अगर आपने 2 दिन में बुक पढ़ ली है तो आप वापस करके नई बुक ला सकते हो. तो मैं फटाफट पढ़ के और नई बुक्स लाती थी. तो बहुत सारी स्टोरी बुक्स, हार्डी बॉयज, एनेट ब्लाइटन, हमारे स्कूल में My वो favorite सारी. too. Hardy Boys, Nancy Drew. I never read Nancy Drew actually ever. Nice I books. got to know about it when I grew much older, and then I was like, I missed on to this. But still, the stories are evergreen. They Yes, are I all used to they read are all Famous Five. detective stories. Yeah, Famous Five. Then there is this author. Who's that female author? Not M. I'm very bad with names. If you ask me, एकदम से पूछते हो तो मेरे को याद नहीं आते हैं. क्योंकि जब आप इतना सारा बुक्स पढ़ लेते हो आपको ऑथर्स के नाम भूल जाते हैं कभी कभी. सिर्फ बुक की स्टोरीज याद रहती हैं. हाँ, स्टोरीज याद रहती है. हाँ जी, पूछिए. चार्ल्स डिकन्स आई यूज्ड टू रीड. या बोलो बेटा मैम कहिए. Anybody read Gone with Sun? पसंद करती हूँ. यूट्यूब मैं यूट्यूब पर देखती हूँ Gone with स्टोरीज. Sun. यूट्यूब Gone पर मैं with स्टोरी YouTube सुनती पे हूँ stories मैम. देखती हूँ. अच्छा ठीक है, आप सुनते हो तो बहुत अच्छी बात है और मैं बहुत खुश हूँ. और आपको और लोगों को खूब सारी स्टोरी सुनानी चाहिए. और अगर आप सुनते हो ना यूट्यूब पे बहुत अच्छी बात है. पर मुझे लगता है थोड़ी सी स्टोरी हमें सुननी चाहिए और थोड़ी सी स्टोरी हमें पढ़नी भी चाहिए. मैम when you come to my school to tell stories. अभी तो आओ, आप भी स्कूल नहीं जा रहे हो. मैं आपके स्कूल कैसे आऊंगी? No मैम next year. नेक्स्ट ईयर. ठीक है. Your favorite subject is math. Actually, math is an amazing subject. I also used to like math a lot as a kid. Math is very Ma'am interesting. don't to learn, not to learn. मैथ में लर्न करने का कुछ होता ही नहीं है. मैथ तो समझ में आती है. एक बार समझ में आ गई तो फिर कभी नहीं भूल सकते. अभी सबसे देखो अच्छी ना बात तुम मैथ लोगों की ने होती है. अभी देखो ना तुम लोगों ने कितने अच्छे से सारे आंसर्स कैलकुलेट करके बताए ना. So it was so simple. Yes, कुछ याद करने की भी जरूरत नहीं थी. How about if your school turns on to this method of teaching?
आपको किताबें ही ना पढ़नी पड़े, and you learn through stories. Yes, ma'am. How would that be? Ma'am, good, nice. Na? Yes, Hmm. ma'am. Okay. Tell me one thing. How are you liking your online studies? Akal, please. Yes, ma'am. Bolo, bolo. You are ready Ma'am, with मुझे all the पसंद है. answers. Sorry? You're not liking Ma'am, it, Akal? हाँ बेटा, बोलो खुशप्रीत. मैम मुझे है ना ऑनलाइन स्टडी पसंद है. Good, very good. Okay. Okay. Yes, हाँ Akalpreet, मुझे तुम भी बोलो. अच्छी लगती है ऑनलाइन स्टडी. ऑनलाइन स्टडीज अच्छी लगती है. Very good. Manat wants to come in. Storytelling competition. बेटा आपको आपकी फिर से बोलना आवाज पड़ेगा. मन्नत, फिर से बोलो, आप क्या कह रहे थे? I think it's the network issue. Yeah, Yeah. network issue. Okay, Reena ma'am. Do we have any more questions? I don't think we have any questions. The time is running out. The kids are just busy looking at you. They love you so Ma'am, much. please sing one song. Sing one song. मैं I think मैं last time आपको सिखाया था ना, Boom Chicka Rocket Chicka. याद है आपको? No, ma'am. मैम आप sing करो. जो मैम ने मैंने बताया था ना. हाँ, मैंने हाँ निकाला. सही बोल रहे आपकी मम्मी. बहुत सिंपल सॉन्ग है. I say boom chicka rocket chicka rocket chicka boom. I say boom chicka chicka rocket chicka. हम आज की सेशन खत्म करते हैं. Over to Reena ma'am. So here we end our session for today. Tomorrow we will have Hema ma'am with us. She will be telling you amazing stories. So till then, bye bye and good night. Namaste. Good night, ma'am. Good Good night. night. Bye. So here we end our session. Thank you so much, Anubha, for coming over. We all loved your stories, and yes, we all do love you. Okay, thank you. Thank you so much. I've already sent your YouTube channel name to them. Anubha Okay. the Storyteller. It's Yeah. simple. Anubha the Storyteller. Very simple. Okay, ma'am. Thank you. Bye. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. So here we end our session for today. Tomorrow we will be having Mrs. Hema Subramanian as our guest for tomorrow. Thank you so much and namaste.